तो तो हम बात कर रहे थे सम और डायरेक्ट सम की। तो पेज आज पता नहीं कुछ एक चीज मिल रही है दूसरी को आ रही है। ओके, तो हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे अगर मेरे पास फी है वेक्टर स्पेस, देन W1 and W2 are subspaces and V is equal to W1 plus W2. तो हम we know that it can happen। हमने एग्जांपल्स लिए हैं इसकी। नाउ इन केस साथ में अगर ये भी ट्रू हो W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो खाली एडिटिव आइडेंटिटी या ओरिजिन हो, देन वी राइट, इसको ऐसे लिखते हैं V इज इक्वल टू W1 प्लस W2। इसको हम कहते हैं सम ऑफ W1 एंड W2 और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सम। तो हमने जो थ्योरम कल किया था इट वाज अबाउट डायमेंशन ऑफ दिस। हमने किया था ये कि डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। और ऑफ कोर्स उसका मतलब ये हुआ अगर ये डायरेक्ट सम है सम के बजाय, then I would have dimension of W1, the direct sum W2 is equal to dimension of W1 plus W2, dimension of W2, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 जस्ट ओरिजिन है और इसकी डायमेंशन 0 है। नाउ वी कैन टेक एग्जांपल्स जैसे कि हमने इससे पहले किया था ये डायरेक्ट सम और सम की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं R लेता हूँ, B लेता हूँ R2 जैसे कि हमने किया था लास्ट टाइम, तो हमने ये एग्जांपल की है शायद। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी यू कैन हैव, what do I mean by V is equal to W1 plus W2? So we mean that every vector V belonging to this vector space can be written as V is equal to W1 plus W2, where of course this small one belongs to the subspace W1 and W2 belongs to the subspace W2। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम सम बोलते हैं। तो अगर अगर साथ में अगर ये डायरेक्ट सम है विच मीन्स अगर ये हमने थ्योरम किया था अगर इस तरह से है तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी यूनिक। इफ एंड ओनली एक्चुअली अगर ये यूनिक है तो ये है, अगर ये है तो ये यूनिक है। और हमने उसका देखा भी था एक थ्योरम। सो इन दैट केस वी राइट V इज इक्वल टू W1। हम एग्जाम्पल कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ V को मैं अगर लूँ R2, ठीक है ना। सो W R2 का मतलब है आई टेक ऑल pairs of real numbers x1 x2 such that x1 belongs to R, x2 also belongs to R। So this is a vector space। V is a vector space over R
over R, then अगर मैं सबस्पेस लेता हूँ, say W1 is equal to, I can take x1, x2, such that x1 is equal to twice x2. Yeah, x2 is equal to twice x1, just to make it. This is a subspace, it can be easily checked. और W2 में लेता हूँ say x1, x2 ऐसे सभी pairs, so that say x2 is equal to 3 times x1. और जैसा कि मैंने last time दिखाया था, now V, then V is equal to W1 plus W2. Because every x1, x2, that's my V, can be written as 3x1 minus x2, comma, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले को, तो it would be 6 times x1 minus twice x2 plus x2 minus twice x1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आएगा 3 times x2 minus 6 times x1. अब अगर इनको सम करेंगे तुम देखो 3 times x1 minus twice x1 plus twice x1, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, you will just get x1. और यहाँ पर भी 6x1 और 6x1 कैंसिल, 3 minus 2 is 1, तो ये बिल्कुल सही है. और अगर मैं देखूं this vector, because this is first one, second one is twice the first one, second one जो है it is twice the first one, और second one यहाँ पे है 3 times the first one. So this belongs to W1. So I can write it as W1 plus W2. And every vector V can be written as W1 plus W2. तो ये तो V तो है sum of these two subspaces, right? Now is the direct sum. क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या ये यूनिक है? उसके लिए मेरे पास क्राइटेरिया है, मुझे देखना है what is common to both. So let W belong to W1 intersection W2. It would imply that W belongs to W1 and W also belongs to W2. It implies that W must be then equal to of the type x1 twice x1, because x2 is twice x1, and W must be also equal to x1 3 times x1. But this would imply twice x1 is equal to 3 times x1, which would imply that x1 is equal to 0, which means that W can be only 0, 0. अगर x1 0 हुआ, तो अगर W 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ W1 intersection W2 is a subset of, there's but only one element, which means that क्योंकि reverse is always true, so this would be equal to this only the origin element. So which means that hence I can say W, yeah, V, which was my R2, can be written as a direct sum. Representation in this case is unique because जो हमने क्राइटेरियन किया था कि इनका इंटरसेक्शन ये है, बट कभी कभी ये जरूरी नहीं हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब सम नीड नॉट बी डायरेक्ट सम, है ना. हाँ, सो अगर मैं लूँ, चलो R3 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. R3 अगर मैं लूंगा, R3 का मतलब ये मेरा V है. सो यू हैव व्हाट, I can take this x1 comma x2 comma x3 such that xi is equal, xi is a real number for all I running from 1 to 3. So this is just triplet of numbers, 3-dimensional space. So V is a vector space over R. और अगर मैं इसकी subspaces लूँ W1, पहली वाली मैं लूंगा, let me call it x1, x2. तीसरे कंपोनेंट को मैं 0 करता हूँ. x1, x2 are real numbers. और दूसरी सबस्पेस ये इजीली है कि तुम्हें पता है, ये सबस्पेस हम बहुत बार कर चुके हैं.
मैं लूंगा 0 x2 x3 such that x2 x3 are real numbers. Clearly this is a subspace. Clearly this is a subspace. So W1, W2 are subspaces. And of course, if V equal to x1, x2, x3 belongs to V, I can write x1, x2, x3 as a sum of vectors. ऐसे मैं कर सकता हूँ x1, x2 by 2, 0 plus this is my V, 0 x2 by 2, x3. क्लियरली ये दोनों साइड्स बराबर हैं, बट दिस वेक्टर बिलोंग्स टू W1, तो इसको मैं स्मॉल W1 कह सकता हूँ, इसको स्मॉल W2. So every vector can be written as sum of vectors. Now this clearly belongs to W1 क्योंकि इसका तीसरा कोऑर्डिनेट 0 है. This belongs to W2 क्योंकि इसका पहला कोऑर्डिनेट 0. So I can write then, क्योंकि हर एक वेक्टर के लिए ट्रू है, I can write W1 plus W2. But V is not equal to the direct sum of W1 W2 क्योंकि ये representation unique नहीं. Why? You can see that clearly. या तो दो तरीके हैं कि अगर मैं लूं 1 1 1, this can be written as 1 1 by 2 0 plus 0 1 by 2 1. So this is equal to W1 plus W2. लेकिन I can also write it as 1 1 by 3 0 plus 0 2 by 3 1. क्लियरली ये भी W1 में है, मतलब दिस इज एक्चुअली W1 plus W2, लेकिन ये दो डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन उसी सब स्पेसेस में. यानी ये रिप्रेजेंटेशन जो है एज डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर्स यूनिक नहीं है, दो डिफरेंट तरीके हैं लिखने के एज अ सम, तो ये डायरेक्ट सम नहीं है. और आई कुड हैव सीन दैट W1 intersection W2 is actually equal to 0 x2 0 such that x2 is a real number. यानी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंटरसेक्शन में ओरिजिन के बगैर. सो दिस वाज अबाउट, मतलब हमने देखा कि डायरेक्ट सम हो सकता है, सम हो सकती है सब स्पेसेस, और कभी कभी डायरेक्ट सम हो सकती है इन केस दोस टू सब स्पेसेस हैव only zero intersection. Now we come to another important topic, although not so important from our point of view, but nevertheless, what we call a quotient space. Now what we have, V is a vector space. Vector space. And W is a subspace of V. तो एक subspace है. So what's a subspace? It's a set. Now, if I take a vector V, now we define coset of W as coset एक set है. कौन सा set है? V plus W, which is where V is a vector inside V. Now this is a set. This is a subspace vector को मैंने इसको add किया. By V plus W, I mean all sums of this type, V plus small w, where small w belongs to big W. तो मैंने एक सबस्पेस लिया, उसके सभी वेक्टर्स को एक एक वेक्टर ऐड किया, एक कोई पर्टिकुलर वेक्टर हर एक W से ऐड किया, जो भी W में है. सो दिस इज कॉल्ड कोसेट ऑफ W. तो ये जो सेट है इसको हम बोलते हैं कोसेट ऑफ W. इट्स अ सेट, राइट? तो मैंने सब स्पेस को कोई एक वेक्टर ऐड किया उसके हर एक एलिमेंट को,
तो जो सब स्पेस अब सब स्पेस नहीं रही, अब ये कुछ दूसरा बन गया, एक सेट बन गया, तो इसको हम कहते हैं कोसेट ऑफ W। तो व्हाट, अगर अब मैं लूं ये कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स, इन सब की कलेक्शन में लेता हूं, कोसेट्स ऑफ W in V, उसको हम कहेंगे इस तरह से, इट वुड बी अ कलेक्शन ऑफ दिस टाइप, this would be collection of this type, V plus W, these are all sets such that V belongs to V। तो मैंने ये बहुत सारे सेट्स हैं, मैंने V लिया, फिर उसके सारे मतलब इस तरह से मैंने V लिया, सपोज V1 लिया, तो V1 प्लस W होगा वो सेट कि मैंने W के सारे एलिमेंट्स को V1 से ऐड किया, ठीक है। इसी तरह से V1 प्लस W जो होगा, W फिक्स्ड है, अब मैंने V2 को कोई दूसरा वेक्टर लिया, उसको सभी इसके एलिमेंट से ऐड किया, तो मुझे एक दूसरा कोसेट मिला। तो इसी तरह से मैं तीसरा एलिमेंट ले सकता हूँ, W को ऐड किया, उसका मतलब हुआ मैंने वो सेट लिया V3 को इस सब स्पेस के हर एक एलिमेंट के साथ ऐड किया, तो इस तरह से मुझे बहुत सारे कोसेट्स मिलेंगे, तो मैं इन कोसेट्स को जमा कर सकता हूँ। ये बहुत सारे कोसेट्स हैं, दीज आर बेसिकली सेट्स जो मुझे सब स्पेस से मिले, राइट। ओके, तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मैं वेक्टर पिक कर सकता हूँ इसमें से। अब तुम्हें याद रखना है W इज अ सब स्पेस ऑफ V। अब अब मान लो मैं यहाँ से कोई वेक्टर ले रहा हूँ और इसमें ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से कोई वेक्टर ले रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि वो वेक्टर W में ही बिलोंग करे। तो एक छोटा सा एक रिजल्ट है कि V प्लस W बराबर होगा W के इफ एंड ओनली इफ V बिलोंग्स टू W। अगर V W में है तो V प्लस W से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज ऑब्वियस। वैसे कोसेट जो होगा वो सबस्पेस के ही बराबर होगा अगर जिस एलिमेंट से मैं कोसेट जनरेट कर रहा हूं वो उसी सबस्पेस के अंदर है। और दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सपोज V belongs to W, then then let V plus some W uh, belong to W. It means that, what does that mean? It means that, अब देखो मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है V plus W is the same set as W। तो ओ सॉरी, मुझे लिखना चाहिए let this belong to V plus W, right? ओके, अगर ओके, now V belongs to W, it means that V plus W must also belong to W। अगर V W में है, यस, क्योंकि W जो है, तो मैं इसको काट देता हूँ। मेरे कहने का मतलब है अगर V W में है then V plus W belongs to W for all W belongs to W because it's a subspace, so it's close with respect to addition। अगर V भी W में है, W भी W में है, which means that this coset V plus W is a subset of W। So similarly, and if W belongs to W, it implies that W plus 0 belongs to, or should I write this? Okay, belongs to, okay, V belongs to W। If V belongs to W, V plus 0, just a minute, एक सेकंड, यहाँ तक तो ठीक है। I got this subset। अब मुझे assumption है कि V W में है और मुझे दिखाना ये, so let W belongs to W। Now then clearly V plus W is equal to V plus W। अब V W में है तो मुझे दिखाना है then this W belongs to V plus W। W belongs to V plus W का मतलब W can be written as
W can be written as simple as इसमें देखिए, तो ये यहाँ है, ये सच है, मुझे रिवर्स इंक्लूजन दिखाना है. So अगर W इसमें है तो I have to show that W can be written as W. Okay. And also, just a minute. Also, V belongs to W. It means that again V can be written as V can be okay. W can be written as W plus V minus W, which belongs to यहाँ मुझे करना चाहिए थोड़ा सा सॉरी. V can be written as मैंने करनी बचा दी, उसको मैं फिर से ठीक करता हूँ, कोई बात नहीं कर. अब चूंकि वी डब्ल्यू में है, यहाँ थोड़ा सब्ट्रैक्शन करना है, तो मुझे दिखाना है डब्ल्यू मस्ट बिलोंग टू वी प्लस डब्ल्यू. डब्ल्यू कैन बी रिटन एज वी प्लस डब्ल्यू माइनस वी, विच बिलोंग्स टू वी प्लस डब्ल्यू, बिकॉज डब्ल्यू माइनस वी बिलोंग्स टू, बस नहीं है. सो विच इम्प्लाइज दैट डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ वी प्लस डब्ल्यू. अब इन दोनों को कंबाइन करके वी विल गेट डब्ल्यू इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू. तो अगर ये सब स्पेस को बिलोंग करता है, यानी अगर V W में है, देन W इज इक्वल टू V प्लस डब्ल्यू. ये हमें ध्यान रखना. एक्चुअली कन्वर्स भी ट्रू है, वो तुम खुद करोगे होम असाइनमेंट, कन्वर्स फॉर्म से, वो इजी, इससे भी इजी. ओके, तो कहने का मतलब ना मुझे एक और सेट मिल गए, तो मुझे एक सेट ऑफ को सेट्स मिल गए, यानी आई कैन क्रिएट दिस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ V. So this is a collection of subsets of V when I let V belong to V. I got यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है, W is a subspace of V. तो यूजुअली ये जो V प्लस W को हम लिखते हैं V बार. ये एक नोटेशन है, इसको जल्दी में लिखने के लिए. V बार का मतलब ये कोसेट. ये कोसेट क्या है? इट इज एक्चुअली V प्लस W where W belongs to our subspace. W is a subspace of V. तो ये जो कोसेट्स हैं, इनकी अलग अगर मैं कलेक्शन, तो इट बिकम्स अ वेक्टर स्पेस. तो वही हमारा थ्योरम है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट स्पेस. ठीक है, तो कोशेंट स्पेस का मतलब क्या है? लेट मी राइट डाउन उसकी डेफिनेशन, और उसके साथ थ्योरम भी हम उसको प्रूव भी करेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है. नाउ लेट V be a vector space over a subspace, sorry, over a field F, and W be a subspace. Then the set of all cosets, the set of all cosets, इसके सभी cosets को अगर मैं जमा करूं, cosets कैसे होंगे? V प्लस W और W, चलो मैं लिखता हूँ इन V, वो कौन सा है? V प्लस W such that V, such that W, sorry, such that V belongs to V forms a vector space over F. ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है, कोशेंट स्पेस उसको हम बोलते हैं. वेक्टर स्पेस ओवर F under the operations defined by
v1 प्लस w, हमें इनको सम करना है, हम इन सेट्स को सम कर रहे हैं। और डिफाइन क्या हम कर रहे हैं, ये मैंने एक कोसेट लिया, ये मैंने दूसरा कोसेट लिया, मैंने डिफाइन किया दिस टू बी v1 प्लस v2 प्लस w। देखो अगर हम सब स्पेस को कोई वेक्टर ऐड करते हैं तो वो कोसेट बनता है। हम कहते हैं इन दो कोसेट्स का सम ये कोसेट है। और दूसरा ऑपरेशन मुझे चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऐसे करता हूँ, अल्फा इंटू वी वन प्लस डब्ल्यू इज द कोसेट अल्फा वी वन प्लस डब्ल्यू। तो ये भी एक कोसेट है। तो यहाँ मैंने जब स्केलर से कोसेट को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये कोसेट मिलेगा, दो कोसेट्स को ऐड किया तो मुझे ये वाला कोसेट मिलेगा। सो ये बाइनरी ऑपरेशंस अगर मैं मानता हूँ, लेट्स कॉल दिस फर्स्ट एंड सेकंड, तो अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस दे सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो ये जो है ये सेट, तो इसको हम कोशेंट स्पेस कहते हैं। वंस वी डिफाइन दोज टू बाइनरी ऑपरेशंस, यहाँ हम लिखेंगे ओके ओके। अब दूसरी बात, वी डिनोट द कोशेंट स्पेस, इसके लिए एक नोटेशन है, yes, this vector space by called quotient space of W in V by W, ऐसे हम इसको लिखते हैं। दैट इज V by W क्या है, V by W है, it is collection of all cosets of W, that is V plus W, capital W, which is a set, ये तुम्हें याद रखना है, where V belongs to V। और ये वेक्टर स्पेस बनाता है under the binary operations defined here। ये दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, they satisfy all the properties of vector spaces, that is it's an additive abelian group, और वो बाकी प्रॉपर्टीज भी satisfy करता है। तो let's do the proof, actually it is indeed a vector space। तो V by W is an additive abelian group, जो पहला चाहिए मुझे अंडर वेक्टर एडिशन, additive abelian group under a vector addition defined by first, ये फर्स्ट है इसका वेक्टर एडिशन, जो ना पहली इक्वेशन है यहाँ पे। अंडर दिस ऑपरेशन ये एडिटिव अबेलियन ग्रुप है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब, सो लेट v1 प्लस w v2 प्लस w बिलोंग टू v by w। इस सब स्पेस में, इस वेक्टर स्पेस में, इस सेट में ये है, हमें दिखाना है इनका सम भी वही होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये सब स्पेस है, ये बड़ा W जो यहाँ पे है, और ये वेक्टर्स हैं, इट इम्प्लाइज दैट v1 v2 belongs to v, which implies that v1 plus v2 also belongs to v because it's a vector space। Hence v1 plus v2 plus w, क्योंकि किसी भी वेक्टर को जब हम w से सम करेंगे ये होगा v by w, that is v1 plus w plus v2 plus w। हमने डिफाइन किया है इसको बाय वन, कैसे डिफाइन किया है, एग्जैक्टली दिस कोसेट v1 plus v2 plus w डस, यहाँ लिख सकते हैं ये बाय वन इसके बराबर है, सो दिस बिलोंग्स टू v by w। तो क्लोजर अंडर एडिशन, तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ये दो वेक्टर्स इसमें हैं, दैट इज अगर मैं इसको ऐसे लिखूं v1 बार, क्योंकि इसका नाम v1 बार भी है, v2 बार belongs to v by w, then v1 bar plus v2 bar also belongs to v by w। तो एक क्लोजर अंडर एडिशन,
दूसरा है दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, दिस एडिशन हैज टू बी एसोसिएटिव। इफ आई टेक v1 bar plus v2 bar plus v3 bar, बट इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज एक्चुअली v1 bar प्लस v2 को मैं वापस लिख सकता हूँ एज v2 plus w plus v3 plus w. Now using first, this is actually equal to v1 bar, तो यहाँ मैं इसको सम कर सकता हूँ, this is v2 plus v3 plus w, so that is by first, but that is the same thing as अगर मैं इसको लिखूँ v1 plus w plus v2 plus v3 plus w, ये जैसे ही खत्म हो जाए तुम फिर से ज्वाइन करना, ठीक है, क्योंकि 2-3 मिनट है। Okay, we should start here, say. Okay, but by definition this should be v1 plus v2 plus v3 plus w, so that is by 1. But using the associative property of the vectors, ये जो vectors हैं they are inside v, so I can write v1 plus v2 plus v3. ये मैंने यूज किया vector space operation in v. v1, v2, v3 belong to v, and v is a vector space. ये है reason. So then I can do the reverse steps, but this is now by definition of 1 again, v1 plus v2 plus w plus v3 plus w. That would be v1 again plus w plus v2 plus w plus v3 plus w, and that is by 1. But that is the same thing as v1 bar plus v2 bar plus v3 bar. तो ये ऑपरेशन जो है ये एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है, सेकंड प्रॉपर्टी को। तो थर्ड प्रॉपर्टी होगी एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? नाउ क्लियरली w belongs to v by w, as w is equal to 0 plus w, and 0 belongs to, ये जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है ना, फिर से ज्वाइन कर, and v plus w plus w is equal to v plus w plus 0 plus w, which is equal to v plus 0 plus w by first, which is equal to v plus w, which is equal to, of course, v plus w. हाँ, I should write it. चलो, इसका मतलब ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि मैंने इसको ऐड किया इस, दैट इज v1 bar plus this w is equal to